रिवाइज कीजिए। 6.2.1 द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। कब और किसके एक्सपेरिमेंट से अनइक्विवोकल प्रूफ हो पाया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है? वे वर्क किए with viruses that infect bacteria called dash dash. The bacteriophage अटैच कर जाता है टू द बैक्टीरिया और इसका डैश डैश मटेरियल इंटर कर जाता है द बैक्टीरियल सेल के अंदर। डैश डैश सेल treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more virus particles. किसने डिस्कवर किया whether it was protein or DNA from the virus that entered the bacteria? क्या प्रोटीन में फास्फोरस होता है? क्या डीएनए में फास्फोरस होता है? वे ग्रीव किए सम वायरसेस ऑन ए मीडियम जो कंटेंट करता है रेडियो एक्टिव फास्फोरस और कुछ अदर मीडियम जो कंटेंट करता है रेडियो एक्टिव सल्फर। वायरसेस ग्रोन इन द presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive प्रोटीन। ऐसा क्यों? Similarly, viruses grown on radioactive sulfur contain dash dash protein but not dash dash because DNA does not contain sulfur. Radioactive phages allowed to attach Escherichia coli। तब जैसे इन्फेक्शन प्रोसीडेड करता है the viral coats removed from the bacteria by dash dash them in a blender। The virus particles were separated from bacteria by dash dash in a centrifuge। बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड था विद वायरसेस that had radioactive DNA were radioactive जो कि इंडिकेट करता है डीएनए वाज द मटेरियल जो कि पास्ड करता है फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्टेड था विद वायरसेस that had radioactive proteins were not. radioactive
यह इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसेस। इसलिए डैश डैश इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। फिगर 6.5 माइंड कैप्चर कीजिए इसका। फिगर 6.5 जो कि शो करता है दी हार्शी चेज एक्सपेरिमेंट को। इसको नोटबुक पर कम से कम 10 बार बनाइए। चलिए नेक्स्ट 6.2.2 properties of genetic material, that is DNA versus RNA। फोरगोइंग डिस्कशन से यह क्लियर है कि debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from dash dash experiments। However, बाद में यह क्लियर हो पाया कि कुछ वायरसेस में डैश डैश इज द जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल डैश डैश viruses, comma dash dash bacteriophage etc. Answer to some of the questions such as कि क्यों डीएनए एक प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है जबकि आरएनए परफॉर्म्स डैश डैश फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड एडाप्टर हैज टू बी found from the differences between dash dash of the two nucleic acid molecules। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं दी टू केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? एक मॉलिक्यूल जो कि एक्ट कर सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल सम क्राइटेरिया। बताइए इन क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अगर कोई एग्जामिन करता है each requirement one by one because of rule of dash dash and dash dash, both the nucleic acid, that is DNA and RNA, have the ability to direct dash dash। The other molecules in the living system, such as proteins, fail to fulfill first criteria itself। जेनेटिक मटेरियल को एनफ स्टेबल होना चाहिए, नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Dash dash as one of the properties of genetic material was very evident in dash dash principle itself, that heat
which killed the bacteria, at least did not destroy some of the properties of dash dash material. This now can easily be explained in dash dash that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. For the dash dash group present at every nucleotide in dash dash is a dash dash group and makes dash dash and easily degradable. RNA is also now to be dash dash, hence reactive. Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to dash dash. Therefore, among two nucleic acids, the dash dash is a better genetic material. In fact, the presence of dash dash at the place of dash dash also confers additional stability to DNA. Detailed discussion about this requires understanding of the process of repair in DNA, and you will study these processes in higher classes. दोनों DNA and RNA are able to dash dash. In fact, RNA being unstable dash dash at a faster rate. Consequently, dash dash having RNA genome having shorter lifespan dash dash and evolve faster. Dash dash can directly code for synthesis of proteins, hence can easily express the characters. Dash dash, however, is dependent on RNA for synthesis of proteins. The dash dash synthesizing machinery has evolved around dash dash. The above discussion indicated that both RNA and DNA can function as genetic material, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is dash dash. आपका स्वागत है 6.3 आरएनए वर्ल्ड की नेक्स्ट डिस्कशन में।